Hello, dear students of class 8. Your teacher, L.K. Tripathi here. Dear children, we have been studying chapter 6 of geography. In new video, we shall discuss about the sugar cane. This is a cash crop grown in some part of the world. It is multiple crops used for food and fodder crops as well as the cash crop. Let's start it. The chief source of sugar along with sugar beet. Sugar cane is both a food and cash crop. It is used for food and cash crop. The waste known as bagasse. The remains of the sugarcane waste comes out after crushing it, that is known bagasse. Is an important ingredient of cattle feed and for making paper. It is used for the cattle feed, also used for paper making. Next, that is the juice of the cane is extracted and used making sugar, molasses and गुड़ और जैगरी. इससे हम गुड़ और जैगरी भी बनाते हैं. जूस इस केन का वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं और इससे शुगर हम बनाते हैं. What type of conditions required for the growth of sugar cane? First of all, temperature. Temperature is such a thing which plays important role in growing sugar cane. Sugar cane is a tropical crop and requires a constant temperature between 20 degrees Celsius to 27 degrees Celsius. For this crop, there is need of a constant temperature. एक जैसा टेम्परेचर यहाँ पर चाहिए इसको ग्रो करने में, और ये टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए. रेनफॉल. What is the rainfall required for this crop? 70 centimeter to 120 centimeter rainfall is necessary for its cultivation. Below that, irrigation is required. इससे नीचे इसको सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है. सॉइल किस तरह की इसके लिए ज़रूरी है? लोमी, एलुवियल, ब्लैक and even laterite soils are suitable for sugarcane production since they are deep and moisture retaining. However, fertilizers must be added to the soil. All types of fertilizers should be given to this crop, means organic and inorganic. Land. Essentially, plain areas are required for its cultivation. Labor. All agricultural operations are done by hand. हर तरह के काम जो इसके होते हैं वो हाथ द्वारा ही किए जाते हैं. Due to this, cheap abundant labor is a must. इसलिए सस्ते लेबर यहाँ पर ज़रूरी हैं, क्योंकि ये लेबर बेस्ड एक्टिविटी है, इसमें बहुत सारे लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट, दैट इज़ एरियाज ऑफ प्रोडक्शन. विच आर द सुटेबल एरियाज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सुगर केन? क्यूबा, ब्राज़ील and India are the three leading producers of sugar cane. China, Indonesia, Thailand, Taiwan
and parts of South America are also noteworthy. These types of areas in the world, countries in the world, are very much fit and suitable for growth of sugarcane, millet and sorghum. In most parts of the tropics, millets are used both as a food and fodder crop. मिलेट फूड एंड फूडर क्रॉप दोनों है, मनुष्यों के और पशुओं के दोनों को ये काम में आती है. These are consumed especially in the drier parts of the tropics where rice and wheat cannot be grown. ये विशेषकर सूखे हुए इलाके में, ट्रॉपिक्स में ये ग्रो की जाती है जहाँ पर राइस और व्हीट की खेती नहीं हो सकती. इन इंडिया 3 टाइप्स ऑफ मिलेट, दैट इज रागी, जवार एंड बाजरा आर ग्रोन. व्हेन इट इज स्मॉल ग्रेन इट इज़ नोन एज मिलेट. जब ये छोटी होती है तो इसे हम मिलेट कहते हैं. वाइल द लार्ज ग्रेन वैरायटी इज नोन एज सोरगुम, जबकि लार्ज वैरायटी को सोरगुम कहते हैं. इन साउथ ईस्ट एशिया मिलेट्स आर यूजुअली द पुअर मैन स्टेपल फूड. साउथ ईस्ट एशिया में मिलेट को पुअर मैन स्टेपल फूड के नाम से जानते हैं. कंडीशंस फॉर ग्रोथ. टेम्परेचर. द एवरेज टेम्परेचर required for this crop is 25 degree to 30 degree Celsius. Rainfall. Millet needs about 40 centimeter to 50 centimeter of rainfall. मिलेट के लिए इतनी रेनफॉल ज़रूरी है. कितनी? 40 to 50 सेंटीमीटर. इट ग्रोज वेल इन एरिड एरियाज. सूखे हुए एरिया में बहुत ही अच्छा इसका प्रोडक्शन होता है, जैसे गुजरात का इलाका है, राजस्थान का इलाका है. यहाँ पर मिलेट्स की खेती बहुत ब्रॉड स्केल पर की जाती है. सॉयल. लाइट सैंडी सॉयल टू रेड एंड येलो लोमी सॉयल्स आर सुटेबल फॉर मिलेट कल्टिवेशन. एरियाज ऑफ प्रोडक्शन. इंडिया, नाइजीरिया, नाइजर, China and Southeast Asia are the major producers of millet. The US, Argentina and Russia produce very minor quantities. It is not grown at large scale in US, Argentina and Russia. At small scale, the cultivation is done of this crop. In India, all dry lands that are not suitable for the growth of rice and wheat grow millet. इंडिया में जो सारे ड्राई लैंड्स हैं जो सुटेबल नहीं है राइस और व्हीट के लिए, वहाँ पर मिलेट्स की खेती की जाती है. इम्पॉर्टेंट एरियाज आर द डेक्कन प्लेटू, राजस्थान एंड गुजरात. जो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं वो डेक्कन प्लेटू है, राजस्थान है और गुजरात. नाउ नेक्स्ट दैट इज बेवरेज क्रॉप्स. व्हाट आर द बेवरेज क्रॉप्स? बेवरेज क्रॉप्स लाइक टी, कोकोआ, कॉफ़ी, दे आर द बेवरेज क्रॉप्स. टी, कॉफ़ी एंड कोकोआ आर कंसिडर्ड beverage crops. All are exclusively grown in the tropics and subtropics, mostly as plantation crops, but are consumed all over the world. ये though it is produced in some part of the world, but consumed by every part of the world. Tea obtained from the leaves of an evergreen bush.
जो हरे भरे बुश होते हैं, पत्तियां होती हैं, झाड़ होती हैं, उससे टी को लिया जाता है। ये चीपेस्ट बेवरेज अवेलेबल है यहाँ पे। The tea buds yield leaves only in the third year. Two leaves and a bud are plucked from each stem to make tea. Conditions for growth: temperature. Tea requires temperatures of 25 degrees Celsius to 30 degrees Celsius for its growth. Rainfall. What is the rainfall required for this crop? A continuously humid climate with rainfall of over 100 centimeter to 250 centimeter favors tea cultivation. Soil. Acidic, well-drained soil with a high degree of fertility is required for tea production. Large quantities of fertilizers are added to stimulate growth. Land. Most tea gardens are on terrestrial slopes which are well drained. Labor. A large skilled labor force is required, especially for pruning, picking, processing, and maintaining the tea gardens. Women from nearby areas are hired for picking the leaves. Production of tea is performed in the areas China, India, and Sri Lanka dominate world tea production. Japan, Indonesia, and Bangladesh are other major tea producing nations. A small percentage of tea is also grown in the CIS states and Central Africa. In India, Assam and Darjeeling are known throughout the world for different brands of tea products produced there. The Nilgiri and parts of the Western Ghats are also important tea growing areas. Coffee. The coffee tree is first discovered growing wild in Kaffa in Ethiopia. इथोपिया के जंगलों कफ़ा में सबसे पहले इसको ढूंढा गया. Is today grown in large parts of the tropics and is a very popular beverage. The coffee beans or berries are picked, roasted and ground to make coffee powder. In this way, coffee is produced in the areas of the world, and first of all it was discovered in Kaffa, that is Ethiopia, and it is used in all parts of the world. Thank you very much.